I will read speech I Have a Dream, addressed by Martin Luther King on August 20th, 1960. And not more than 2 minutes, please. Okay, okay. So, हे माझे स्वप्न आहे. आज आपल्या देशाच्या ऐतिहासिक स्वातंत्र्य चळवळीत आपल्या बरोबर सामील होताना मला फार आनंद होत आहे. गुलामगिरी विरोधी कायदा अस्तित्वात येऊन आज 100 वर्ष झाली. आज आपण त्याच नेत्याच्या पुतळ्याच्या खाली उभे आहोत. निग्रो गुलाम आशेच्या नजरेने न्याय व्यवस्थेकडे एका अपेक्षेने पाहत आहेत. आजचा दिवस गुलामगिरीच्या भयान रात्रीतून न्यायाच्या उषक कलाकडे आपण जाण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत. आज 100 वर्षानंतरही निग्रो जमात गुलाम मुक्त नाही. आज त्या गोष्टीला 100 वर्ष झाली तरी समाजात निग्रो जमात ही बहिष्कृत असे तिचे स्थान आहे आणि न्याय व्यवस्थेपासून ही जमात दूर आहे. आज 100 वर्षानंतरही निग्रो समाज गरिबीतून गुजराण करत आहे आणि भौतिक सुखापासून दूर आहे. आज 100 वर्षानंतरही निग्रो समाज अमेरिकन समाजाचे शोषण सहन करत आहे आणि बहिष्कृताप्रमाणे जीवन जगत आहे. आज आम्ही इथे निग्रो समाजाच्या व्यथा मांडण्यासाठी आलेलो आहोत. एका अर्थाने आम्ही आमच्या देशाची राजधानी मध्ये आमचा धनादेश वठवण्यासाठी आलेलो आहोत. जेव्हा आपल्या देशाच्या घटनाकारांनी स्वातंत्र्य घटना जाहीर केली त्यात आम्हाला असे आश्वासन मिळाले आहे की प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला घटनेने हक्क दिलेले आहेत. आम्हाला असे वचन दिलेले आहे आणि सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिलेले आहे की आम्ही आमचे जीवन स्वातंत्र्याने आनंदाने जगू शकतो. ते आम्ही सिद्ध करण्यासाठी आज इथे जमलेलो आहोत. थँक्यू. He was so much into speech, his hands were moving correctly. They were only emphasizing what he was speaking. So this is what, so the involvement, the desire to express. If you have a strong desire to express, other things will follow. And I think the translation must have been very good. Yes. 2 minutes. मुखे खून दियो ऐं मां तव्हांखे आज़ादी ॾियण जो वाइदो थो खणां. दोस्तों, 12 महीना अॻे हिकु नए समारोह में सॼी हलचल या वधीक में वधीक कुर्बानियूं ईस्ट एशिया जा भाउर ऐं भेणुनि जे अॻियां रखियो वियो हो. अॼु मां तव्हांखे अॻिले साल में मिलियल सफलताउनि जो हिसाबु ॾींदुसि ऐं ईंदड़ साल में असांजो कहिड़ियूं ज़रूरत आहिनि ते तव्हांजा अॻियां रखंदुसि. पर इहो सभु करण जे अॻे मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां कि वरी ही ॻाल्हि महसूस थिए कि असांजे आज़ादी मिलण जो ही सुनहरो मौक़ो आहे. अंग्रेज़ दुनिया भर जे में लड़ाइयों में मशगूल आहिनि ऐं हिन लड़ाइयुनि में हिननि खे हिक जे पुठियां ॿी हार ॾिसणी पई आहे. दुश्मन हाणे घणो कमज़ोर थी वियो आहे. हिन जे करे असांजी आज़ादी जी लड़ाई घणी सवली थी वई आहे. भगवान जो ॾियो मौक़ो 100 सावण में हिकु दफ़ो ईंदो आहे. हिन करे असां कसम खाधी आहे कि असां हिन मौक़े जो सॼो फ़ाइदो खणी असांजी मातृभूमि खे ब्रिटिश राज सां आज़ाद करे सघूं. Yes. Feedback? Yes. Wait a minute. See, feedback, you were totally a little high pitch. So what you have to do, pause, and maybe he has something to say. Nervousness in the tone of the voice, which needs to be overcome, and that is something which will come through practice. Obviously, this is not an activity you have been regularly doing, but if you do it, you will also come closer to your language. Maybe a little longer pauses. Longer pause. Actually, I'm not very used to talking in my mother tongue. I know, therefore we asked him to do it. This is a real test. One more thing that you can do is
practice the breathing techniques, the I can. When you are taking a little deeper breath before you start a sentence, there will be lesser anxiety when you are speaking. Practice it. Thank you. Give her a big hand. Yes. Yeah, I will be taking the Netaji Subhash Chandra Bose speech done on July 4th, 1944. Request you all to attend here because I want to have the expression of East Asia, Singapore, July 4th, 1944. Yeah, your attention please. Yeah. मित्रांनो, 12 महिन्याआधी एक नवीन कार्यक्रम सर्वोच्च बलिदान पूर्व आशिया मधल्या भारतीयांसमोर मी ठेवला होता. आज मी तुम्हाला तुमच्या समोर मागल्या वर्षाच्या आपल्या प्रगतीविषयी आणि येणाऱ्या वर्षाच्या गरजेची ठेवाण करणार आहे. पण ते करण्याआधी तुम्ही हे जाणून घ्या की आपल्याकडे स्वातंत्र्य मिळवण्याची ही एक सुवर्ण संधी आहे. ब्रिटिशर्स युद्धामध्ये गुंतले आहेत आणि जागोजागी त्यांना हार मिळत आहे. त्यांची ताकद आता फारच कमी झाली आहे. ही दुर्मिळ संधी आपल्याला सोडून चालणार नाही. ही एक सुवर्ण संधी आहे आपल्याकडे आणि ती परत आपल्याला मिळणार नाही. जणू देवानेच दिली आहे ती संधी आपल्याला आज. माझ्या आशा आणि आकांक्षा फक्त 30 लाख पूर्व आशिया मधल्या भारतीयांच्या निमित्ताने नाहीत. ती आहेत भारतामध्ये शेकडो लाखो देशवासियांपासून जे अतोनात कष्ट आणि बलिदान द्यायला तयार आहेत. दुर्दैवाने 1857च्या लढतीनंतर आपले देशवासी निहत्ते आहेत आणि शत्रूंकडे हत्यारांचा भंडार आहे. आजच्या काळात तुम्हाला सर्वांना ठाऊक असेल, हत्यारांशिवाय युद्ध जिंकणे, मुक्ती मिळवणे अशक्य आहे. प्रोव्हिडन्सच्या सहाय्याने आणि जपानांच्या मदतीने आज शक्य झाले आहे की पूर्व आशिया मधल्या भारतीयांकडे आज शस्त्रे आहेत. तुमच्याकडे शस्त्रे आहेत. पूर्व आशिया मधले भारतीय एकजूट आहेत. तुम्ही एकजूट आहात. ब्रिटिशांनी भारतामध्ये भारतीयांना तोडण्यासाठी वापरलेल्या युक्ती, त्यांचा परिणाम भारतीयांवर झाला आहे, पण तुमच्यावरती झालेला नाही आहे. म्हणून मला वाटते की आज परिस्थिती आपल्याला अनुकूल आहे आणि गरज आहे ती फक्त भारतीयांना बलिदानासाठी पुढे येण्याची. Yes, and therefore remind yourself how the body language is very important. His body language was very suitable, excellent. His pauses were very good. His modulation was very good. You spoke very well, my God. Yes, we have another Telugu, Hindi. Yes. I have selected Netaji's speech. మిత్రులారా, 12 నెలల క్రితం తూర్పు ఆసియా ఖండంలోని భారతీయులందరి ముందు మేము ఒక పరిపూర్ణ త్యాగం అనే తత్వాన్ని ప్రవేశించుకున్నాం. ఈరోజు ఈ ప్రస్తావనకు సంబంధించి మనము సాధించిన విజయాలను రాబోయే రేపటి కావలసిన దిక్సూచి మీ ముందు ఉంచదలిచాను. ఇది ప్రస్తావించే ముందు నేను మరొక్కసారి నొక్కి ఒక్కాడించి చెప్పదలిసింది ఏమంటే, ఇది మన స్వాతంత్రం సాధించడానికి ఒక స్వర్ణాకాశం మన ముందు ఉంది. ఈ రోజుటి పరిస్థితుల్లో బ్రిటిషర్లు ఒక క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. అన్ని పక్కల నుండి ఓటమి చెవి చూస్తున్నారు. మన శత్రువు చాలా బలహీనంగా ఉన్నాడు. అంటే 5 సంవత్సరాల పూర్వం కంటే స్వాతంత్రం సంపాదించుకోవడానికి ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశం. ఇటువంటి అవకాశం 100కో కోటికో గానీ రాదు. అందువల్ల మన అందరం ఏకగ్రీవంగా నిలిచి అవకాశాన్ని పరిపూర్ణంగా సద్వినియోగం చేసుకుని మన మాతృదేశానికి ఈ రక్కసి బ్రిటిషర్ల కబంధ హస్తాల నుండి స్వాతంత్రం సంపాదించుకుందాం.
రండి, అందరూ కలిసి రండి, కలిసి సాధిద్దాం. భారత్ మాతా కీ జై. జై హింద్. See, I think his modulation was very good. Pauses were very good. But one hand he put in his pocket. So what has happened, if one hand is in the pocket, the other hand will also not work very efficiently. So don't ever put the hand in the pocket. Right. Give him a big hand. I think that was very Yes. Next. Hindi. I think most of the people are doing Subhash Chandra Bose only, so I am also repeating same. Everybody needs blood, no? Dream also. I have a dream. यारों 12 महीने पहला पूर्व एशिया के हिंदुस्तानियों के लिए पूर्ण संगठन और पूर्ण त्याग का कार्यक्रम शुरू किया गया था. आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियां का लेखा और आने वाले वर्ष के मांगों के बारे में बताऊंगा. इससे पहले कि मैं ये बताऊं, एक बात ये आप अच्छे से समझ लें, ये एक स्वतंत्रता के लिए सुनहरा मौका है. अंग्रेज सारे संसार में संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की वजह से उनकी एक के बाद एक हार हो रही है. दुश्मन बहुत कमजोर हो रहा है और आज से 5 साल पहले से स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई अभी बहुत आसान हो गई है. इस दुर्लभ ईश्वरीय अवसर 100 साल में एक बार आता है. इसलिए हमने सौगंध खाई है कि हम इस मौके का पूरा उपयोग करेंगे और अपनी भूमि को अंग्रेजों की गोद से मुक्त करेंगे. मैं अपने संघर्ष के परिणाम के लिए बहुत आशावादी हूँ, क्योंकि ये केवल 30 लोग पूर्व एशिया के लोगों की कोशिश पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि भारत के अंदर हमारे लाखों देशवासी स्वतंत्रता के लिए दुख और त्याग करने के लिए तैयार हैं. दुर्भाग्य से 1857 के बड़े युद्ध के बाद हमारे देशवासियों को निहत्था कर दिया है, जबकि दुश्मन के पूरी तरह शस्त्रधारी है. आज के जमाने में बिना शस्त्रों के और बिना आधुनिक दल से कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती. भगवान के आशीर्वाद से और उदार निपुण की मदद से पूर्व एशिया के भारतवासियों के लिए शस्त्र और आधुनिक दल का बनाना संभव हुआ है. इसके अलावा पूर्व एशिया के भारतीय स्वतंत्रता का प्रयत्न में एक है. भारत के अंदर अंग्रेजों ने बहुत भेदभाव पैदा कर दिए हैं जो पूर्व एशिया के हिंदुस्तानियों में नहीं है. इसलिए एक उपयुक्त सम्मिलन हालात बन गए हैं जिससे हमारा संघर्ष सफल हो सकता है. अब सिर्फ चाहिए कि सब भारतवासी साथ में आए और उसका एक मूल्य दें. हमारे पूर्ण संगठन का कार्यक्रम में मैंने आदमी और पैसे और सामान मांगे थे. आदमियों की कमी नहीं है, बहुत से आदमी ज्वाइन कर लिए हैं. थैंक यू. See, towards the end, you became a little fast. And the enthusiasm with which you started, that you did not maintain. So otherwise, yes, pauses were good and the speech is very good. Give him a big hand. લૂથર માર્ટિન કિંગ. હું આજે ખુશ છું કે મને આપણી વચ્ચે આપણી સાથે વાતો કરવાનો સૌભાગ્ય મળ્યો છે અને આપણા દેશના ઇતિહાસમાં સ્વતંત્રતાની માટે કરેલો સૌથી મોટો પ્રદર્શનના રૂપમાં ગણાશે. 100 વર્ષ પહેલા એક મહાન અમેરિકી જેની પ્રતિકાત્મક છાયામાં આપણે ઊભા છે, આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયને અન્યાય સહી રહેલા લાખો નીગ્રો ગુલામના મનમાં એક ઉમ્મીદનો કિરણ સળગાવશે. આ ખુશી એ લોકો માટે બહુ લાંબો સમય સુધી અંધકારના કેદમાં રહેવાના દિવસોમાંથી ઉજવાળામાં જવાનો સમાન છે.
પણ આજે 100 વર્ષ પછી પણ નિગ્રો સ્વતંત્ર નથી. 100 વર્ષ પછી પણ એક નિગ્રોની જિંદગી અલગાવની હથકડી અને ભેદભાવની જંજીરોથી જકડાયેલી છે. 100 વર્ષ પછી પણ નિગ્રો એક સમૃદ્ધિના વિશાળ સમુદ્રના વચ્ચે એક ગરીબ દ્વીપમાં રહે છે. 100 વર્ષ પછી પણ નિગ્રો અમેરિકી સમાજના એક ખૂણામાં સડી રહ્યા છે. 100 વર્ષ પછી પણ થોડા और જાન લો. 100 વર્ષ પછી પણ નિગ્રો અમેરિકા સમાજના એક ખૂણામાં સડી રહ્યા છે. આપણા દેશમાં જાતે નિર્વાસીની જેમ રહે છે. એટલા માટે આજે આપણે બધા એના શર્મનાક સ્થિતિને દર્શાવવાની માટે જમા થયા છે. એમ સમજો કે આપણે આપણા દેશના રાજધાનીમાં એક ચેક કેશ કરવા આવ્યા છે. જ્યારે આપણા ગણતંત્ર, સંવિધાન અને સ્વતંત્રતાની ઘોષણા ઘણા મોટા શબ્દોમાં લખી રહ્યા હતા, ત્યારે એ એક વચનપત્ર પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા હતા, જેની ઉપર હરેક અમેરિકી નિવાસી વારિસ રહેવાના હતા. આ પત્ર એક વચન હતું કે બધા વ્યક્તિ કાળા હોય કે ગોરા, બધાને જીવન, સ્વાધીનતા અને આપણી પ્રસન્નતાની માટે અગ્રસર રહેવાનો અધિકાર હશે. Good. See, a little faster pace. Faster pace, but longer pauses and more enthusiasm. But it is good, very good. Give him a big hand. Which language? मित्रांनो 12 महिन्यापूर्वी पूर्व आशियामध्ये सर्वोच्च बलिदानाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. आज मी तुम्हाला त्याविषयी सविस्तरपणे सांगेन. पण त्याच्या अगोदर मी आपल्याला पूर्ण विश्वासाने सांगतो की कधी नव्हे एवढी सुवर्ण संधी आपल्या समोर आली आहे आणि आपण जर ही संधी ओळखून आपले पूर्ण प्रयत्न केले तर स्वातंत्र्य काही दूर नाही.